हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है भाई सबके? हाउस एवरीवन डूइंग एंड बैक आफ्टर अ वेरी पॉपुलर डिमांड. ग्रिस भाई इज बैक विद अस. ग्रिस भाई, ये सारे लोगों ने हमको तंग कर दिया था, ग्रिस भाई को वापस लेके आओ, ग्रिस भाई को वापस लेके आओ, ग्रिस भाई को वापस लेके आओ. हम इनको कैसे समझाएं कि ग्रिस भाई इज लाइक मतलब द क्रीम ऑफ द क्रीम, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट गाय. नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं रुक था जा उनके रुक जा पास रुक जा छोटे रुक लोगों जा, के लिए. इधर ही रुक जा, इधर ही रुक जा. आई एम वेरी अपसेट. आई एम वेरी अपसेट. ऑफ स्टेज मैंने तुझे बोला कि इस लाइक यार इट फील्स लाइक सो लॉन्ग, और तूने क्या जवाब दिया? यार इट हैज बीन टू लॉन्ग, दैट्स व्हाई इट इट फील्स हैज सो बीन. लॉन्ग. इट हैज बीन टू लॉन्ग. यार पीपल सब्सक्राइबर्स ऑफ मेनिस एंड द मंक, मेरी कोई गलती नहीं है. आई एम नो, I am not these two. I've been waiting for an invite. लेकिन they don't want to know. Brown मुंडे चलाया था थोड़ा सा क्या 2-3 months. We're gonna bring it back. We're gonna plan it properly and we're gonna back. Don't panic, people. Brown मुंडे वापस आएगा. लेकिन इन लोगों ने तो when I left you guys, how many subscribers you on? I come back and I'm so happy for you guys. Absolutely smashing it. Absolutely smashing it. So I'm so happy to be back. यार हमारा ये तो कोई ये हमारी क्रिस अपनी भाई, चैनल है वेलकम. यार. I love सच्चे it. दिल I से love speaking to you guys. सच्चे दिल से थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड सो हैप्पी दैट यू आर बैक. ऑनेस्टली दिल से बहुत अच्छा लगता है whenever we speak with you, Chris bhai. And yeah, but Chris bhai, so much has changed since we have spoken. Klopp has said he is leaving. Edwards वापस आ गया. पूरी दुनिया बदल गई, पूरे जज्बात बदल गए, सब कुछ ही अलग हो गया. Chris bhai, where do we बस even begin? let's begin with something that has not changed. Grace bhai, and let me ask you a question straight up. जी नूनेस ने अभी भी गोल मारना शुरू नहीं किया है, मतलब यार नूनेस नूनेस अभी भी मिस नूनेस कर रहा क्या है यार. क्या आइटम है यार. कोई अजीब आइटम है. लुक लुक, मैंने तो शुरू से नूनेस का ये बोला था कि ही इज नॉट माय कप ऑफ टी, शुरू में. और हर मैन यूनाइटेड फैन गवाह दे सकता है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर सपोज्ड टू बी बाइंग हिम एंड लिंक्ड विद हिम, और मैं खुश था. मैं बहुत खुश था. आई वाज सो हैप्पी दैट मैन यूनाइटेड आर गेटिंग दिस गाय, ही इज नॉट दैट गुड. और फिर जब वी गॉट हिम, पीपल वर सेइंग अभी देखना ग्रिस बोलेगा oh now he's going to be the next Ronaldo. I said no, I'm not. I'm going to tell you that in our system, for Jurgen Klopp's way of playing, प्रॉब्लम जरूर होगा. कभी हमारे लिए, कभी ऑपोजिशन के लिए, ये जरूर होगा. लेकिन he's never gonna be like that Harry Kane style finisher. He's gonna be just a problem. और वही बात बनी ना कि he was nicknamed Chaos, Captain Chaos. लेकिन the problem is sometimes he causes chaos for us as well. Yeah. मसला ये है. मसला ये है. No, we're gonna come to all these things, and we're gonna talk about all the players, contracts, and everything. मनीष भाई की शायरी पहले ही आ गई है, एंड मनीष भाई की शायरी मेरे, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे समझ में नहीं आती है, बट मनीष भाई लव्स अस एंड वी लव मनीष भाई. दोस्ती भी क्या अजीब चीज होती है, क्या गजब चीज होती है, मगर ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होती है जो पकड़ लेते हैं जिंदगी का दामन, जिंदगी में दामन इसका, समझ लो जिंदगी उनके बिल्कुल करीब होती है. बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा मनीष भाई. थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन. रियली अप्रिशिएटेड. एंड हम लोग obviously we're going to talk about a lot about Liverpool and everything. Grace bhai, I'll start with the obvious. The Jurgen Klopp announcement. That was a bolt out of the blue, और मतलब क्या क्या बोलते हो आपकी, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, थक गया था योगन, आपको लग रहा था कि कभी ना कभी ये होगा तो अचानक ही होगा, या लाइक एब्सोल्यूट, लाइक मैं तो खाना खा रहा था और उसके बाद मैं पानी भी नहीं पी पाया था जब मैं योगन क्लॉप की न्यूज आई थी. Jurgen Klopp की न्यूज तो बिल्कुल बिल्कुल अलग थी. आई एम इनफेमस फॉर सजेस्टिंग के न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था. तो क्योंकि मैंने ये सुना था जब नवंबर दिसंबर मैंने ट्वीट किया था ना, तो मुझे खबर मिली थी टॉक्स
Hmm. क्लॉप एंड लिवरपूल टॉक्स, जब मैंने फिर रिक्वेस्ट किया इन्फॉर्मेशन का, मैंने उसने मुझे थम्स अप दे दिया था। मैंने जल्दबाजी की। We are just amateurs. We are not professionally paid journalists. And this is why we are amateurs. This is why we are not professional journalists. मैंने thumbs up देकर, टॉक सुनकर, मैंने कहा क्लब न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया। Hmm. Then it was then it was later revealed, of course, जब खबर निकली कि the talks was true. The information, जो initial information मुझे मिला था, वो सच था, Hmm. because the Hmm. Athletic and everyone confirmed that he told them in November, so talks were taking place. Hmm. लेकिन I don't want to swear on your channel, लेकिन voice वही You can. यार, the fucking news was the opposite. It was, he said no. So मेरा information, even though 50% correct, the most important 50% was wrong. because I, because I thought he was extending, because thumbs up मुझे मिला था, लेकिन shocking news यार. um, just shock. क्या करें? What? Jürgen Klopp? और जैसे उसने बोला कि I'm going at the end of the season, not थक गया वो. even not even now, थक गया हुआ, this and that. Look, I still think असल बात निकलेगी. I don't think it's थक गया है, but now's not the time to speculate. There will be time for speculation. There will be time for, what really happened behind the scenes. Like in my personal opinion, Hmm. no fact, my personal opinion, okay, he's not, it's not as black and white as it seems. It doesn't make any sense to me. What do you Uh, mean? If you can elaborate a little bit. especially जो मेरा opinion है ना, it was even enforced in my own brain when the Michael Edwards news came back कि Michael Edwards भी आ रहा है वापस. मुझे लास्ट नवंबर मुझे एक आदमी ने मुझे थोड़ी सी कहानी बताई थी कि Jurgen Klopp has offered his resignation in November last year, and that uh, he's been forced to continue. Forced क्या मतलब? Listen, please carry on. And I didn't think nothing of it. होता है ना, you don't think nothing of Hmm. it, yeah. But if you remember, last November we were going through hell. So मैंने Yeah. ये सुना था कि he offered his resignation, um, and I think it's quite clear. It's quite clear in the Liverpool circles that Michael Edwards left in the first place after not having any or the same influence that he used to have. Jurgen Klopp assumed more control. Jurgen Klopp and Pep Linders were in charge of a lot more things. So Edwards की जरूरत नहीं पड़ी. Then they employed Jurgen Klopp's friend for a 6-month or 1-year contract. ठीक है, Schmatka साहब, Georgie boy. Hmm. So I think कहीं ना कोई कहानी निकलेगी, क्योंकि I don't think, and if anybody is naive to think that हाँ Jurgen Klopp ने बता दिया मैं जा रहा हूँ, or then FSG tried to get Edwards in the last 3-4 months, बहुत गलतफहमी है. They've been trying to get Edwards forever and ever and ever. लेकिन Edwards की काफी क्या कहते हैं requirements थी. Hmm. As we all know, he was never going to come back as just like a director of football. He's big time now. Hmm. So I think there is something in that. But let's see. As I said, now's not the time. Now's not the time. I think Edwards ki or Klopp ki kahani maybe in the next year, 2 years निकलेगी कि क्या situation है. I'm sure Grisby it is going to रायता फैलता है ना. There's a saying कि the beans are spilled. Is that the saying? Like Spill the beans. The spill the spill the beans. Yeah. beans. So it's gonna happen eventually, but not right now. Maybe when he leaves. यार क्या है ना, मेरे को तो हमेशा लग रहा था कि last season when we were like in tatters, I could see him run out of energy. मेरे को लगा तभी ज्यादा likely था ये announcement.
And Hmm. the announcement came when we were on top of the league, when we were in the final of the League Cup, या मतलब उसके आसपास थे, हम लोग चारों कंपटीशन में इन्वॉल्व थे. So the timing of it was very awkward and weird, which makes us question a lot of things. But I unfortunately, yeah, it could have gone two ways, and it has gone south for us. The appointment, like would have dragged us for the rest of the season, and we would have been like we could have done something very, very special. But unfortunately, the team is running out of energy now. And क्या होता है ना कि जब कोई resigned हो जाता है अपने fate से, I think the players also did that, and he was not able to, or he is not able to get the best out of these players now, because after his announcement बहुत बहुत इमोशनल हो गया मैटर. कभी कभी मेरे को लग रहा था कि ये इमोशनल सुनामी हमारे लिए काम कर सकता है, बट हमारे अगेंस्ट चले भारी पड़ गया. गया. At the end of it it went against us. लेकिन ये And मानस it's यही it's बात है ना, मानस यही बात है ना, we because we are such an emotional club, emotion fan base, emotional coach, sometimes when it's good तो हम उसको कहते हैं कि it works in our favor. And for example, up till 4 weeks ago, सब लोग बोल रहे थे, oh my god, everyone is doing it for Klopp. The players are playing yeah, out of their skin for Klopp. Emotional हो गया because he said he's leaving. The momentum is carrying us. यार कुछ ना कुछ होगा यार. Wait, one down, League Cup, and 3 to go. Europa League के हम favorite. FA Cup के joint favorite. League के second, third, whatever, right? लेकिन जब results go against you, the yeah, smallest sign of adversity, यार हम too emotional है यार, ये emotion की वजह से यार, ये club की resignation कह सकते हो, you know, he resigned and now the players are not playing for him. The truth is always somewhere in the middle. The truth is always somewhere in the middle. मुझे भी at the time, I don't know about you guys, what you Hmm. thought, कि अजीब timing था Klopp announcement का. हाइंडसाइट में तो यही लगता है हमेशा, बिकॉज हम जो सिचुएशन में थे, आई थिंक ग्रिज भाई आपका ही ट्वीट था, ये वीक was supposed to be so crucial for Liverpool Football Club, right? When we were planning the end of the season. ये वीक था जहां हमें स्पर्स खेलना था, आर्सेनल ने स्पर्स Semi-final, खेल लिया, एंड देन semi-final सिटी, Europa League था. आज semi-final Europa League था. Against who? बेंफिका या मार्से, जो भी, अभी पता भी नहीं Marseille. कौन. Marseille. मार्से. Marseille. हाँ, So how confident we would have been against Marseille? yeah, yeah, Against Spurs, yeah. ये वो game थी जो 2 years ago उन्होंने हमें रोका था Where we drop from one. winning. So this was supposed to be redemption. बस यार वही ना, वही जो मैं गिफ यूज किया ना रॉय हॉडसन वाला, वो परफेक्ट था ना कि दिस इज सपोज्ड टू बी वाइटल वीक, लेकिन वो वही रॉय हॉडसन वाला जो ऐसे कर देता है. क्या हो गया यार, हमारी सीजन ठुस हो गई, ठुस बस. एंटी क्लामेटिक हो गया, एंटी बहुत क्लामेटिक हो गया, बहुत बट बहुत ठीक है, बहुत. ठीक है. लाइफ गोज ऑन, निधि. And Yes. I think now being bald is the flavor of the town now, Nidhi. At least now slot भैया भी आ गए हैं. Hair is I mean, overrated, huh? we we were taken by surprise. ग्रिज भाई, जब स्लॉट का नाम आया, एंड विद इन अ डे और टू इट वाज ऑल बट कंफर्म्ड कि ही इज गोना बी द गाय, एंड मीडिया में आके वो खुद ही बोलने लगा कि मेरे को जाना है लिवरपूल. ग्रिज भाई, रूबेन अमोरिम How do you? के भी का भी नाम था. रूबेन अमोरिम तो प्लेन में चढ़ गया, किसके प्लेन में चढ़ा? वो वेस्ट हैम के प्लेन में चढ़ा है, चेल्सी के प्लेन में चढ़ा, किसी को पता नहीं अभी तक. क्या वो पार्टी करने आया था, किसी को कुछ नहीं पता, बट सडनली स्लॉट हो. What is just your feeling about this appointment? Because according to many, Chris, it is a very underwhelming appointment. Depends who you speak to यार, depends who you speak to. जिस जिस आदमियों के साथ मेरी बात हुई है, like I've got a couple of interesting journalists coming from Holland on my channel. अगर मैं प्रमोट कर सकता हूँ थोड़ा सा, अरे बिंदास. फुटबॉल खानिज, तो अगर लिवरपूल सपोर्टर्स हैं तो check it out. I've got some Feyenoord fan channel
and journalists coming out. So, and also the people I'm spoken to said, agar aapka fan base was excited for Amorim, then they should be excited for Onslaught. And the way they explained that was they are very similar in terms of working as the third biggest clubs in their respective leagues. So, for Mhm. example, Amorim coaches Sporting Lisbon, who are the third biggest behind Porto and Benfica. Onslaught works for Feyenoord, who are behind PSV and Ajax. Both of their clubs' budgets align compared to the big guys. Both guys have had experience working for smaller clubs, working they through. Kya naam hai uska? Amorim worked at Braga, Mhm. and Onslaught worked at AZ Alkmaar. Alkmaar. Actually, he was going to win the league if it wasn't for COVID season. That would have been one of the stories of Europe if they won the league. So both हर आदमी बताता है कि the playing styles, formations are different, but in terms of profile, working with a budget, working with a sporting director, working through the leagues, and then eventually winning the leagues in their respective countries against the big boys, you should be equally excited. If you are excited about Amrim, ठीक है Amrim की beard or hairstyle or his appearance is like James Bond, or ठीक है Hmm. Onslaught looks like I don't know वो जो The James Bond villain. James James Bond Bond villain, villain. वो एक villain और एक hero लगता है. Lekin in Hmm. terms of their credentials and skill levels, what they've shown, he should be very excited. I mean, look, as I said, मुझे इतना इल्म नहीं था 100% इतना इल्म नहीं था. But since the last 2 weeks, I've done a lot of research and homework on him, and everyone is saying good things about him. But with the Amorim case, again, we will never, because they will never disclose the real reasons. Like, and again, in my opinion, it was a power struggle. In my opinion, Amrim would have wanted more from the ownership and more in terms of the player profile to play his formation. So we know he plays 3-4-3 or 3-5-2, whichever way you look at it. Whereas जो हमारा new coach है, he plays a very similar system, very similar to Jurgen Klopp, and the one we're playing, 4-3-3 or 4-2-3-1. It can be changed. So I think it's about power, uh, and I think it's not about money or anything like that. I do think Amorim was ahead of him, but they will never disclose that. They will never Yeah. admit that. Like, I'm not down about Slot. I'm just nervous, and the reason for that is because Cautiousness. Cautiousness. Nidhi, we have to be. Why? Because we are just getting rid of, or he's going, the best coach of our lifetime. So of course we are nervous and cautious. Who can Mhm. replace Jurgen Klopp? Who? Yeah. True. Yeah. True. True. I mean, योर्गन क्लॉप के बाद 2-3 ही नाम आते हैं जो उससे बेटर हैं दुनिया में, एंड स्पेशली कंसिडरिंग जो सिचुएशन में जो उसने हमें डिलीवर करके दिया है, तो मे बी वो 2-3 से भी आधे हो जाते हैं, if it makes sense. It's a very scary time, ग्रिस्बा, बिकॉज मैं निधि से बात कर रहा था कि मेरा मतलब फर्स्ट लिवरपूल मेमोरी 2001 में है, एंड प्रोबेबली 2001 के बाद एक और सीजन के बाद I started watching properly. तो जेरार्ड होलियर, राफा बेनिटेज, all these guys we've seen. But Klopp almost gave 9 years. So obviously we have grown up watching other managers as well. But in our adult life, where we started working, where people have started families, where we have quit jobs, got fired, pursued our dreams, Jurgen Klopp has been there through all of that. So just to see someone else standing there is gonna be weird for a lot of reasons. So to replace Jurgen Klopp as a manager तो एक बात है, but as a man, as a human being, as a father figure type, वो slot को करना पड़ेगा, बहुत बड़ी responsibility है. जो I think Ruben Amorim, मेरे को again I might sound
bitter right now when I say this. मेरे को थोड़ा वो जो भी मैंने पढ़ा है 10 मिलियन का मेरे को बोनस चाहिए, 10 मिलियन मेरे को चाहिए वेज, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए। आफ्टर यर्गन क्लॉप ऐसा कोई आता है तो अजीब लगता है। अगर मैनेजर ही ऐसे सब बातें कर रहे हैं तो प्लेयर्स क्या करेंगे भाई? लाइक वही बात ना कि ट्रेंट की क्या बात सुनी थी, वो उसने इंटरव्यू दिया था ना स्काई वन को ऑन द ओवल ऐप, और उसने यही बोला था कि I'm gonna feel weird, like I'm gonna feel come to preseason और देखेंगे कि wow, that man, the only man I knew in terms of my coaching career, is not gonna be there. Hmm. You know, people like Trent have only been coached by Jurgen Klopp. Think about it. या तो और हमारे वही बात ना, मानस तेरी बात बिल्कुल सही है कि this is all we've ever known is this guy with a cap and glasses on. Every time we look on the bench or press conference, अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा preseason, but this is huge for the guy who's coming in to try to win over our, not just our minds on a football pitch, but our hearts, Yeah. because it's gonna take But it's gonna take but someone Griz bhai, special to win our heart over. but Griz bhai, honestly, we've had this conversation. मैं इस चीज के ऊपर मुझे क्या लगता है ना, I think we should stop looking for the next Jurgen Klopp. हम मतलब Jurgen Klopp the man, whatever his connection with the city was, whatever जो भी था, I think we should stop looking for the next Jurgen Klopp, because फिर ना वो it's bound to fail. Arne Slot is going to be the next Arne Slot, and वो जो भी करेगा वो देखेंगे. Nobody has looked into the future. यहाँ चैट में बहुत सारे ज्योतिषी और बेजान दारू वाला लोग बैठे हुए हैं जो मार्क माय वर्ड्स, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, बट द रियलिटी इज कि उसमें से ₹5 भी बेट करने को बोलो तो कोई कर नहीं पाएगा. Nobody knows what is going to happen in the future, right? Yeah. So I just think that we should be looking at the next Liverpool manager at a little bit of a clean slate. We should not look at कि ये बंदे को he should become the next Jurgen Klopp. वो that will lead to disappointment overall. मेरे को ऐसा लगता है. I totally agree with you, Nidhi, but the narrative साला वही रहेगा because he is the man who's coming after Klopp ना. मैं I तेरी know. बात totally मान रहा हूँ कि हाँ. as supporters हमें वो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए. हाँ. But उसका सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वो साला क्लॉप के बाद आ रहा है. तो वो तो है ही. ये प्रश्न तो उठेगा ही. Guys, almost 430 people are watching here. Please like the stream and please subscribe to Grizz Bhai ka channel, Football Carnage. The link is in the title. Please do subscribe to his channel as well. Amazing content as always. Grizz Bhai produces a lot यार of fun. मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इजाजत. I want to बोलिएगा. promote my playback channel. What Can I channel? put it Please. playback? It's like Yeah, It's a yeah, new do. it's a platforming stream for platforming. Of course, first and foremost, you are most invited anytime, any place, any network जो होता है, to join in the conversation. I'm going to put it in the link in the chat. All you have to do is click on the link and join my page. Free, no paying, no membership, no nothing. Just click and join. And उसका advantage आप ये है कि लिंक मैं post आप करूंगा लिंक अभी. दे दो, मैं ऐड कर. हाँ. Yeah. हाँ. So मैं yeah, so it's just another platform that the Big Six, we've got a partnership with them. अभी मैंने post कर दिया. So I'd really appreciate if your listeners, subscribers, watchers could just click on that, and that'd be amazing. But yeah, look, I think Nidhi, you nailed it when you said we have to stop trying to look for the next Jurgen Klopp, because that's impossible. But so many people said that after Shankly as well, right? So many people said that after so many great managers looking for the next great manager. So the next manager has to be his own man, his own person, but understand what the club is about. क्योंकि Jurgen Klopp का ये फायदा क्या था, ये biggest trait था कि he understands the club. And I think this guy, again, speaking to people from Feyenoord, it's a very similar club in terms of passionate fan base, working class fan base club, Rotterdam. Everything aligns. They even sing "You'll Never Walk Alone."
Unka bhi chant, you never walk alone. So he will know. He will know about what it means to be Liverpool coach. That's the good thing. Right. Divyajan, we'll take your super chat. We marked it. We'll take it later on. एक एक मिनट bro, Manas, just give me like 1 second. So my daughter is not in town, she's at her dadi's house, so she's using my sister's phone to say good night to me. Good night beta, it's way past your bedtime, please go to sleep. I love you, good night. Right, so that is out of the way. गुड नाइट Thanks beta. ईशी, मेरे को भी तो बोल दे गुड नाइट, मानस अंकल को भी तो बोल दे। एनीवे, गुड नाइट, गुड नाइट। यार ग्रेस भाई, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. अभी पीपल आर अभी जैसे दिव्यार्जुन का भी सुपर चैट था अबाउट कि कौन होगा अपना टारगेट्स, कौन होगा. We have a pretty big task here. We have a pretty big task ahead of us, and that is the contract renewal. Salah ka, Trent ka, Van Dijk ka. What do you think about that? And this knowing ki Arne Slot is not like the biggest of names. What are you thinking about that situation? Yeah, this is the biggest. It is, right? This is the biggest It's a big, dilemma. it's bigger than the transfers. मैं ये बोलने वाला था कि everyone usually always talks about incomings, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, new players. For me, this summer, especially under the regime change, it's all about preserving our current huge megastars. Van Dijk, Trent, Alisson, Salah. These guys are megastars. And in no way, shape, or form can we let more than, and I'm not saying we can let one, but more than one would be, in my opinion, disastrous. So, whatever the incoming plans are, I think they need to be क्या कहते हैं, put on the back burner. The front foremost thinking in our heads has to be preservation of all our players. There will be squad players that we can have a discussion on today's show or another show. We'll do plenty of content, yeah. Inshallah, I'm here as long as I'm alive and healthy. We'll do plenty of content during the summer about the squad players. Unka to yes, no, it doesn't damage that much because you can replace squad players much more easily than bloody club legends. And the players that I mentioned are club legends. So first and foremost, Edwards, Hughes, and Slot. I mean, people are saying Slot has no say. Yeah, come on. Of course, Slot has some say, but of course, Edwards and Hughes will be making the final decision, in my opinion, about contracts. Like they must keep and preserve the said players, the Germany Bolana legends. They, in my opinion, they all have to stay. That's my opinion. This is a very tough one to both of y'all. आपने जो चार नाम लिए अभी, if there's one that we can afford to let go, I'm so sorry. These are club legends, but this might be a conversation Joe Edwards or Hughes might be having as well. Because अगर slot आ रहा है supposedly और वो बोलेगा कि भाई मेरे को 2 या 3 प्लेयर चाहिए supposedly, उसको भी तो अपना रंग मतलब रचना है ना, ये तो कहां से आएगा वो पैसा? So who are these players? Salah is one of the best players in the Premier League era. Alisson of the best goalkeepers. Van Dijk club captain है. Trent हमारा है. He's मतलब मैच विनर. कैसे हम डिसाइड करेंगे यार कि कौन जा रहा है, किसको हम जाने दें? It's so tough. There's one side of the argument as well, जो वो आपको बोलेंगे कि अगर अभी आपने वैन डाइक और साला पे कैश इन नहीं किया तो आप उनका प्रीमियम आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? और ये आर्गुमेंट में टोटली, मैं तो चाहता हूं दे रिटायर एट लिवरपूल ऑफ कोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली हम वी आर नॉट लिविंग इन लाला लैंड जो हम लोग सबको क्लब लेजेंड्स को रिटायर करवा दे एंड मतलब इट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ मेरे हिसाब से. So how do we decide this? Do we let go of
of a Darwin Nunes slash Luis Diaz so that we make the money, or we run out the contracts of these players, give them more extension, and they retire. How do we even begin to plan this? It is such a tough one because इधर इतने emotions भी involved हैं. Both emotions. And it's one of those ones where this is why this is why they are paid big money to make big decisions. And there will be big decisions. Agar, if you want me to give you a simple answer out of the four that I mentioned, Allison, Trent, Virgil, and Salah, in my humble opinion, if you put like a gun to my head and said, you must sell one, then the highest value player out of all of them is Mohamed Salah. The least likeliest to sign a new deal is Salah. The most wanted out of the four, actually Trent would be. But you get my point. The oldest out of the four actually is Virgil, but Mohamed Salah, like, but that's a crazy hard decision. मैंने आसानी से बोल दिया, but it's not. No, You know, it's not. I would prefer, like you said, selling squad auxiliary players on the verges of the team. That's how you raise your money. Your Kelleher's, your maybe Joe Gomez, George Nikliya Khabar, my good friend Sam Maguire. Sam Maguire ने exclusively reveal किया कि Joe Gomez is considering his future. But I think many people will be considering their futures, man. I think when I say many, I think 4 or 5 will be considering their futures because most of their career or majority of their best career has been under Jurgen Klopp. So it's a shock to the system for them as well. New ownership, not new ownership, but new leadership as well with the regime, sporting director, football director. I understand there will be players thinking, what's next? Which direction? So this is why I'm saying, हर आदमी बोल रहा है कि Hughes and Edwards, but I think Arne Slot will have to have a conversation explaining his playing style, explaining his criteria, what he expects. I think it's nervous times. I have a माना super charts ले लो उसके बाद मैं एक question पूछता हूँ. हाँ. Amulya, thank you so much for your contribution. Manish, from Roy Evans to Jurgen Klopp, no one came close to what Jurgen has done for the club and for the fans. Manish, totally agree. Thank you so much for the contribution. Divya Arjun, again, I think we've addressed this kind of, maybe we will eventually, but I don't think ये आज के chat में we'll be able to name the 2 people because अभी तक slot आया ही नहीं है, so हमें पता ही नहीं क्या है. But बहुत रूमर्स आ रहे हैं, कोई रूमर्स समविल के आ रहे हैं, कोई आपके 2 सेंटर बैक आ रहे हैं फ्रॉम स्पोर्टिंग. रूमर्स तो मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर आ रहे हैं, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते. But obviously if we let go of a big name, then it puts us in a position where we can address 2 or 3 players आराम से. But देखते हैं, when we cross the road we will think of that. But thank you for the contribution. Yes, Nidhi. But Chris bhai, we are right, we are one of the मतलब topmost financially stable clubs in the world. हमको पैसे की ऐसे कोई problem नहीं है. Right, our owners don't spend money, but we are not like we are short on money. हमको कोई पैसे की वजह से problem नहीं हो रही. Right? The thing is, do we need to sell them? What is this conversation? Okay, Salah को बेचना ही पड़ेगा, Van Dijk को बेचना ही पड़ेगा. If and news तो latest यही है कि साला रहना चाहता है. अगर ये रहना चाहता है तो क्यों बेचना है हमको? Why do we need to sell? It's not like कि हमारी हालत खराब है ना, हमको थोड़ी परेशानी हो रही कि हम पैसे इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं, इधर उधर से लोन ले रहे हैं, राइट, कि हम अपने स्टेक्स बेच रहे हैं. So why do we need to sell these players? What this conversation? Yeah, you know, we don't need money. We're not desperate. We're not in any financial situation like other clubs. कोई हमें जरूरत नहीं है. We are just a very efficiently run club
that doesn't want to be क्या कहते हैं, like lose out in any financial deal. So, for example, if we were let Salah go on a free, we wouldn't like that, but we can afford Hmm. to let him go on a free. Hmm. My Exactly. guess, my guess would be, if Salah, because we can't force Salah out. Salah wants to stay, and Salah will stay if he wants to stay. As simple as that. Hmm. Hmm. Even if we accept bids for him this summer, if he wants to stay, हम force नहीं उसको कर सकते ना. So we are in a position where we can let him go for free. It won't affect us financially, but we just don't like to be caught out financially. There's a difference, right? True. We're so True. used to being brilliantly run, it hurts our pride and ego, the people that run our club. If we ever get shanked like Chelsea get shanked, or Manchester United, or all these other clubs, left, right, and center financial losses, you know, we just don't, we like to be operating as a good business. But And Grisbad, that is one of the reasons why we are not in that position, right? We are not in bilkul, that. bilkul, Where we are very, listen, because that is why, because we know when to sell and we end up selling. we were, think about it, yeah, we made a huge bid for Moises Caicedo, Hmm. 100 million plus. Does that sound like we are short of a penny? It's just like we like to run efficiently, yeah. Yeah. And that's it. And to run efficiently, you try to sell the player before or when he's on the downward spiral. And look, Mohamed Salah, we know he's an icon. He will be a Premier League legend. For me, the greatest right winger in Premier League history, bar none. There's no one who's been better than him as a right winger in Premier League history. But, but since the injury, he hasn't looked great. Will he ever be back to those levels? No. And we are Liverpool fans and we're Mohamed Salah fans. No, he won't get to that level again. Is he going to sign a new deal? Unlikely at this stage. Unlikely at this stage. Will clubs still come in for him and try to tempt him with 70, 80, 90 million pound offers? Yes, we have to Saudi make a clubs. decision. Saudi clubs, no one else can. PSG maybe. Apart from PSG, no one else will pay that kind of money for him now. 80 And million plus. to be fair, look, I mean, ग्रिस भाई, look, अपने राइवल्स को हम बेचेंगे नहीं, चाहे कितना भी पैसा वो लोग ऑफर कर दें. लाइक आई सेड, वी आर नॉट इन अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. जो दूसरे बहुत सारे क्लब्स हैं, who are not in a position to pay that kind of money for, even if let's say they want that kind of a player. तो पीएसजी और सऊदी ही लग रहा है मुझे कि वो, डू यू थिंक इट्स अ वाइज आइडिया, मतलब उसको फ्री में जाने दो? व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन, अगर इसमें से इमोशनल क्वेश्चन हटा दिया जाए तो अभी जाने दो कि फ्री में जा रहा है तो कोई बात नहीं? I change my mind weekly. I change my mind weekly. This week I've realized we can't have that much change at the club. We can't. So quick. Yeah. Last week I was very sure sell him if the offer comes Hmm. in. But then I've been thinking, you can't force him out. Can't. अगर साला ने बोला कि no, I'm fine, I'm happy. Hmm. क्या करेंगे? Mbappe done the same. So many players Yeah. have done it the same in their respective clubs. He knows what he's going to do when he's a free agent. Hmm. These guys plan their careers 1 year ahead, man. Minimum 1 year ahead. So you can't force him out. क्या करेंगे? The scary thing, na, Nidhi, over here is that it is just not about him. It is about Van Dijk. It is about Trent as well, who are in Yeah, the of course. last year of their contract. And if in the recent few years, Grisby, Nidhi, मैं तो सोच रहा हूँ, Gini Wijnaldum, Daniel Sturridge, Divock Origi, Roberto Firmino. These are players, very good players who've left on a free. But Hmm. this is my You point. We're can't. so well run that we've worked out the cost
over their contract, how much use we have got out of them. Fine, no problem. It's You just can't, we have but a. It's just we have with Salah because of the new coach, because of maybe a mini rebuild again. It would be Hmm. nice to get that 80 to 100 million pound. That's it. it's and ये सब में ना अभी like अभी ग्रिस्बे आपने काइसेडो का बोला we are in a position where we are not financially distressed. निधि ने भी बोला, बट अभी तो एडवर्ड्स वापस आया है 2 साल के बाद. हमें पता है नहीं वो क्या सोच रहा होगा. 100%. उसने क्या बोला था, डू यू रिमेम्बर? हेंडो को मत दो, ब्रूनो गोमारेस को लाओ. Hmm. उसने क्या बोला था कि वाइनाल्डिम की जगह हम लोग एंजो को टारगेट करते हैं. ये सब जब वो रूमर्स थे रिवर ना. प्लेट में था. हाँ, हाँ, जब वो जब वो रिवर रिवर प्लेट. प्लेट में था. समझ रहे हो? तो उधर तो इमोशन निकाल ही दिया था उसने. वाइनाल्डिम और हेंडो का उससे बोला नहीं भाई, नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन. नाउ दैट ह्यूमन बीइंग हैज कम बैक. So again, वो Michael Edwards factor is going to be huge in these contract negotiations again. I Yeah, think it this is. यही बात ना कि this is why we FSG have brought him back, यार. वही वही ना. अभी तो हम तो एज लिवरपूल सपोर्टर्स बोल रहे हो वी आर एफिशिएंटली रन, ओ अमेजिंग. इधर इधर 2% टिकट राइस में लोग लड़ रहे हैं. ठीक है, अब वो जो भी है मेरे को उसमें घुसना नहीं है. फिर वो बोलेंगे भाई इसमें भी दिक्कत है, और फिर आप चाहते हो कि लोग रिटायर भी हो जाएं, फ्री में भी जाएं. यू कांट हैव एवरीथिंग मेरे हिसाब से. एडवर्ड्स True. विल नो. I एडवर्ड्स को तो agree. बैठा के बोला रहेगा भाई सुन, तू तू तेरा काम ये है, तेरे को ये करना है. अब तू देख तेरे को कैसे करना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको साइन करना है, किसको नहीं करना. I agree with that. I agree with that. But I have another question for both of you. And इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं. ग्रेस भाई, would you say कि Michael Edwards is a bit of a Klopp replacement also in certain ways? मतलब हम लोग जो slot को मान रहे हैं कि slot ही है पूरा Klopp का replacement. In a lot of sectors, Michael Edwards is the Klopp replacement. Do you निधि think? कहना है बिफोर ग्रिसबाय Hmm. आंसर्स, आई थिंक माइकल एडवर्ड्स इज द माइकल एडवर्ड्स रिप्लेसमेंट. No, he's not. Richard Hughes is the Michael Edwards replacement. नहीं नहीं That's the नहीं. thing. हाँ हाँ, ओके, रिचर्ड ह्यूज इज द माइकल हाँ, एडवर्ड्स हाँ, रिप्लेसमेंट. हाँ. क्या मेरे हिसाब से ज्यादा हो गया था कि वो शिफ्ट ऑफ पावर हो गई थी वो 2-3 साल में, और थोड़ा ये अनबन हो वही गया. है, ये वही है, वही वही है. ग्रेस भाई, आप क्या बोलते हो? I know what you mean. Yeah. I know what you mean. But I think this is just. I think FSG को महसूस हुआ कि all of these bloody bids going in for 70 million, 100 million, 90 million. This is not us, डर गए. Which way is our club going? What the fuck, हाँ. man? Where's our 35 million pound players gone? Where are they, yaar? हमारा तो target price is 35 to 50 million. So this is Mhm. why they've gone back to a guy they know, they trust. He knows the club inside out, just like Jurgen Klopp did, of course. But this is business. Or what are FSG? Businessmen, yaar. We want them to be like us and have the same level of support and passion and love for the club. They don't. They just don't. And they never will because they are businessmen. And who's Yeah. been the best asset for them from a business point of view? Of course, Jurgen Klopp. But Michael Edwards hasn't been far behind. Yeah. And Exactly. some would even say on a par with Klopp in terms of business. So they're gonna bring if Klopp's going, they're gonna try to bring back the second best guy. And I agree with you from that angle. Samjha? Okay, Hmm. from that example, he's the Klopp replacement because he's the second best man for business, and they are business people. So they brought back what suits them ultimately. But we are hoping, God willing, it suits us as well. वो it worked so well, na. It Mm. worked like a dream.
That partnership worked like a dream. Yeah, We are just hoping that this Edwards Hughes partnership works like a dream with Slot as well. क्लॉप के That's the साथ एक क्लॉप के साथ एक एक the day he signed we were like क्लॉप आ गया भाई. डॉर्टमंड के साथ 2 लीग जीता है. He not with Bayern. Okay, like we were convinced, we were sold कि आ गया भाई, फरिश्ता आ गया, संभाल लेगा अभी. And let's be honest, guys. And let's be honest. When Klopp came in, the initial feel good factor, the performances, the fist pumps, the West Brom wave, everything was about Jurgen Klopp and his team and the players. एडवर्ड्स का नाम तो बाद में आना शुरू हुआ हमारे जुबान पे. एडवर्ड्स हमारा गेम प्लान नहीं हो सकता. इट्स लाइक he निधि तू can be बोलता ना behind the एनफील्ड हमारा scenes. स्ट्रेटजी. अरे हाँ क्यों behind the scenes he can be your game plan. Why is yeah, why is but Florentino Perez Real Madrid का game plan? I'm not saying कि वो निधि Perez बन जाएगा. I'm not हाँ saying वो Perez या बन जाएगा. But हाँ why behind the scenes? Why can't he? He can't be your main man. to 2000%. But Florentino Perez knows Florentino Perez will never get a slot. Don't get me wrong. I am अरे gonna back slot too totally. But too direct. मेरे हिसाब से what I'm मैं trying to say is that कि Michael Edwards and Klopp का जो combo था ना वो perfect था till it whatever happened. What I don't even know. वो episode देखने लायक रहेगा जब reveal होगा या कभी होगा या कभी नहीं होगा. And knowing the type of human being Klopp is शायद से कभी नहीं होगा. He will not क्या कहते like हैं washes dirty dirty laundry laundry in in start public. public. watching Yeah, हाँ, yeah, washing dirty linen in public. yeah, Right. yeah. Yeah, I mean, look, I'm not making a direct comparison, but I'm just saying that maybe football is becoming like that. If you look around, चेल्सी में देख ले नाउ मैनेजर से ज्यादा बड़ा ओनर हो गया है. मे बी फुटबॉल इज चेंजिंग दैट वे. हो सकता है मतलब उस तरह से वी कैन अप्रोच दैट सिचुएशन. बट ग्रेस भाई इससे आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आर्ने स्लॉट. Grisby, you have a bit of time or you in a rush? I have to because I'm starting my show 7 o'clock. So 5 minutes. In 5 minutes. अच्छा, Okay, Yeah. okay, okay. फाइन. Yeah, guys, before Grisby makes a move, please do subscribe to his channel. Like I've mentioned, the link is in the title, Football Carnage. Please जाके subscribe करिए. 440 लोग देख रहे हैं स्ट्रीम को, so stream को भी like करिए. It goes a long way to all of us. It helps us a lot. It encourages us. Sorry, Nidhi. नहीं, मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिफोर ग्रेस भाई लीव्स. आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट आर्ने स्लॉट और इट गिव्स यू द बटरफ्लाइज? Butterflies तो जरूर दे रहा है. हाँ. लेकिन butterflies, as we all know, we felt butterflies in our stomach. It can be for exciting and it can be for nervous situations, right? Yeah. Butterflies doesn't mean positive. It can be positive and negative butterflies. So I'm at that stage. थोड़ा सा nervous हूँ. Jurgen Klopp he's replacing. He's not replacing, you know, any Chacha Shakil or something. You know, he's replacing Jurgen Klopp, the man, the myth, the legend who changed our fortunes. We were like, listen, we were like Manchester United fans. Think about it. We were like Chelsea fans. Think about it. I'm sorry. I apologize to Manchester United and Chelsea fans in your chat, but we were there. And this guy came along and took us out of those conversations. Yaar. Rehne do, yaar, we're in a different conversation now. So now the fear is we could be back in that conversation with Manchester United and Chelsea. You know what I mean? We could be back in the conversation, yeah. Hello, guys. We missed you. It's been 9-10 years, but how are you? We are back. But we're hoping that he continues. We stay away from these type of conversations. Love you all, but we don't want to converse with you too much. So I'm nervous. I do have faith in him, Nidhi. I think he's a good coach. And as I said, the research that I've been doing and the homework behind the scenes that I've been doing on him. And as I said, check out my channel if you want to see more content. I'm going to be getting a few journalists from Firenode
the local press, the equivalent of James Pearce, the equivalent of Paul Joyce, that know this guy inside out. So we'll be covering Onslaught a lot, and I think I'm okay. I'm okay, as you can be in terms of anyone replacing Klopp. Fair enough. Fair enough. Thank you so much for your time, Guriz bhai. Thank you. करने की बात नहीं, please invite me again. Pleasure. हमें भी बुलाइए कभी, हमें भी I बुलाइए enjoy कभी. chatting to you, yaar. I enjoy Whenever, chatting to you. whenever, just let मुझे us मजा know. आता है, honestly. It's like friends, you know. It's no nervousness, there's no awkwardness. We understand each other's minds. I love it. It's the best. Thank you, and you guys are the best. Thank you so Appreciate it, much. Guriz bhai. Appreciate it. फिर मिलेंगे. मिलता है soon, Guriz bhai. Take care. Good Inshallah. luck for Thank you. your stream. Bye bye. खुदाफिज. निधि, मेरे को तो लगता है it can go Both left ways. या right. Yeah, I think हमने बात की है. मैं nervous तो मैं बहुत हूँ भाई. देख, कोई भी होता ना निधि, हाँ. नर्वसनेस तो होती. अगर टूकल भी होता, मेरे को पता है तू तो भाल मतलब नोट्स देता अपने. अगर जोजे मरीनियो होता तो हम लोग मतलब मैं मतलब जो सिगरेट भी नहीं फूकता वो सिगरेट फूकने लगते. मतलब क्या होने वाला है अभी कुछ पता नहीं. हाँ. मतलब एंड स्लॉट का इट कैन गो निधि बोथ वेज भाई. इट कैन बी लाइक हाँ, अ मतलब ये मास्टर जीरो या वन वाला अपॉइंटमेंट है. हाँ. This is the thing with this particular thing. This is a 0 or 1 वाला appointment, honestly. नहीं, I totally agree. But देख यार, मतलब अभी कोई भी आता ना, मतलब the only people that could have replaced Klopp and अपने को एकदम कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो मतलब एंचेलोटी जैसे लोग वो रियलिस्टिक नहीं. तो क्लॉप का कोई भी, अगर मैं बोल रहा हूँ जो सबसे नंबर 1 फैन फेवरेट, और ये हमने पहले भी बात की है भाई, जो नंबर 1 फैन फेवरेट था ना बेसिकली योर जाबी अलोंसो, वो भी आ जाता ना, तो भी हमने को लगता कि यार एक्सपीरियंस तो इसको भी नहीं है, क्या करते हम, राइट? सो दैट इफिनेस हमेशा रहेगा. विद स्लॉट वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, राइट? टूकल का यार इंटरेस्टिंग, तूने टूकल का नाम बोला यार. मैं अगेन और मैं चीज बोलता हूँ यार, देख टूकल, एंड आई डोंट नो मानस, इस पे हमने उसमें बात नहीं की अपने वीडियो में. टूकल यार मेरे को ना, ही इज अ ग्रेट मैनेजर, टैक्टिकली मेरे को बहुत सही लगता है वो. लेकिन अभी तो देखा तूने, उसने ही किम के बाद फर्स्ट यार ही डिडंट ही किल किम मिन जे's कॉन्फिडेंस. ये पब्लिकली बोलने की जरूरत क्या थी? डू यू अग्री विथ माय स्टेटमेंट और डू यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन? the tie is not done. हाँ, You can win. You can win the Champions League अभी भी. I know एग्जैक्टली. I know आप ये सीजन के बाद छोड़ के जा रहे हो. अगर आपको सेकेंड लेग के बाद पूछते ना कि वेयर डिड इट गो रॉन्ग, और हाँ, अगर आपको तभी बोलना था ना, तो भी जस्टिफाइड नहीं होता. काफी लोग ये कहते कि आप क्यों कर रहे हो, एक प्लेयर को ऐसे क्यों मारो, आप तो छोड़ के जा रहे हो, बट उसको तो रहना ना बायर्न में. एग्जैक्टली. I found it very weird कि you called out. भाई तूने तो मतलब फिर खुद पे प्रेशर डाल दिया ना भाई, जब तू एरिक डायर उसको खिलाया जब तेरे पास डिलेक्ट अवेलेबल था. डिलेक्ट शायद अनफिट था ये मैच के लिए, बट डिलेक्ट या माय उपमकानो पॉइंट, कोई तो रहेगा, कोई तो और एक और रहेगा ना. नहीं, डिलेक्ट पे मकानो दोनों अवेलेबल नहीं थे दोनों ये नहीं थे मैच में. क्या? हाँ, दोनों मैच अवेलेबल नहीं थे. मेरे को उसमें बस ये लगता है ना भाई कि यू, ठीक है, तेरे को बर्नाब्यू में जाके खेलना है, यू आर नॉट द फेवरेट्स देयर, मेरे को सारी कहानी समझ में आती है, लेकिन यू आर नॉट आउट ऑफ इट भाई. तू भी बायर्न म्यूनिख का मैनेजर है यार. दिस इज नॉट सम रैंडम क्लब. मतलब रेड स्टार बेलग्रेड, हालांकि उन लोग ने भी चैंपियंस लीग जीता है, मतलब ये रेड स्टार बेलग्रेड की बात नहीं हो रही है ना भाई. तू भी बायर्न म्यूनिख का मैनेजर है, द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन यूरोप, Yeah. राइट? अभी 3 साल पहले ही आपने देखा है. सो आई डोंट नो यार, आई जस्ट आई डोंट नो. मतलब मेरे को टूकल के साथ, जो मेरे को लोग पूछते हैं इशू क्या है, मेरे को यही इशू है टूकल के साथ. मतलब दिस गाय इज ग्रेट एज टैक्टिशियन, नो डाउट. उसने ये मैच में भी दिखाया कि टैक्टिकली वो चीजें बदल सकता है, कुछ चीजें कर सकता है, बट आई डोंट नो मैन, आई जस्ट डोंट नो एज अ मैन मैनेजर. और हमको यार अभी जरूरत है एज समबडी
who will put that arm around the player का shoulder and say कि भाई तू चिंता मत कर, I'll take care of stuff, that kind of stuff. तो is भाईचारा, Tuchel that भाईचारा has to be back. भाईचारा भाईचारा आई डोंट नो यार, मेरे को एंड किम मिन जे का रिस्पॉन्स यार, वो जब वो मिक्स्ड जोन के तरफ से भी जा रहा था, ही वाज लाइक रियली डाउनबीट, उसका बॉडी लैंग्वेज इज लाइक आई डोंट वांट टू टॉक, एंड उसने बस सॉरी बोला इन कोरियन. सो आई डोंट नो यार, आई डोंट नो. Yeah. This is my problem with Thomas Tuchel. क्या है ना कि थॉमस टुकल, जोसे मरीनो, जाबी अलोंसो, ये वो जिसका भी नाम लेना है निधि, हमने देखा है इनकी टीम्स को खेलते हुए. ये जो स्लॉट तो निधि इतनी अननोन क्वांटिटी है ना. हाँ, वो अननोन का प्रॉब्लम. बाय बाय मनीष, टेक केयर, गुड नाइट. थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड. इतना अननोन क्वांटिटी है ना वो निधि. मैं तो एक बात बोलूं, ब्रेंडन रॉजर्स भी जब अपॉइंट किया था, हमें पता था ना कि स्वानजी कैसा खेलता था. लेट्स बी ऑनेस्ट, जब रॉय हॉडसन आए हमें पता था कि क्या होने वाला है. ओके, देख पता था क्योंकि वो इर्द गिर्द के लीग से लेके वेके आए हैं. जो हमने डायरेक्ट डच लीग में जाके, ऐसा भी नहीं कि आयाक्स का मैनेजर उठाया या पीएसवी का मैनेजर उठाया, हमने बोला हम फायरनोर्ड का उठाएंगे भाई. मजे ही मजे. मजे ही मजे. हाँ मतलब इट इज अ बिट ऑफ मतलब यार कोई भी इसमें ये सोचेगा कि यार ये क्या किया, और वो मतलब सोचना गलत भी नहीं है. अभी देखना पड़ेगा इसमें कैसा हाउ दिस थिंग्स प्लान आउट. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी समथिंग that is going to be there. Nischay says if Tuchel did wrong with Kim, can we say Ten Hag did wrong with Sancho? मानस तू पहले बता, फिर मैं इसका आंसर दूंगा. If Tuchel did wrong with Kim, okay, जो अभी हुआ, Ten Hag did wrong. यार सैंचो का तो इशू ही अलग था. वही, ये कहानी ही अलग है. सैंचो का ऑन फील्ड इशू तो जो भी होगा, आई एम श्योर यूनाइटेड फैंस को बेटर पता होगा कि परफॉर्मेंस क्या थी. बट आई थिंक उसके एंटिक्स ऑफ द फील्ड, मतलब ट्रेनिंग में नहीं आ रहा था, या जो भी था, पार्टी कर रहा था, जो भी, आई थिंक सब कुछ वो ऑफ द फील्ड वाले इश्यूज थे. टूकल ने जो किम के साथ किया है वो बहुत ही अलग है कंपेयर टू टेन हैग ने तो सैंचो को लोन में भेज दिया भाई. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि टूकेल ने जो किम को किया ना, वो दैट वाज मोर ऑफ गेम फीडबैक, और टैक्टिकल लेवल पे मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप अभी भी अलाइव हो टाइम में. टेन हैग और सैंचो का तो केस ही अलग है यार. वो तो मतलब वो तो ऑफ फील्ड ज्यादा है, मतलब ऑन फील्ड मतलब ऐसा थोड़ी कि मतलब अनलेस उसमें कोई और डीपर कहानी हो. अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपको देख के ऐसा नहीं लगता है ना कि टूकल डिसलाइक्स किम, बट सैंचो और टेनहैग का तो प्रॉब्लम है, वो दे डोंट लाइक ईच अदर, ऐसा लगता है. तो ये तो कहानी अलग है. डिड टेनहैग डू रॉन्ग विद सैंचो? नो, आई थिंक सैंचो भी वहां पे गलत था. दैट्स माय ओपिनियन, बट थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन. आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि किम तो टूकल की साइनिंग है. I don't. हाँ. Is Sancho also Ten Hag signing, or Sancho already था? नो I नो think नो नो नो, सैंचो तो रोनाल्डो के पहले साइन कर लिया था, अगर तेरे को याद होगा तो. तो Sancho already था ना क्लब में. एग्जैक्टली, या हाँ. या सैंचो वाज अ डिफरेंट. सैंचो का केस अलग है. आई डोंट थिंक किम उसका और किम मिंजे का केस आर सिमिलर, बट बिल्कुल. यही. हाँ सॉरी. नहीं हाँ बिल्कुल नहीं. एक दो लोग पूछ रहे हैं यार, हाउ इज माय हेल्थ. थैंक यू सो मच यार. आई विल जस्ट टेक दैट पिक्चर. एक दो बार लिखा है, सो आई जस्ट थॉट आई शुड. चल, आई मिस्ड इट एनीवे, बट थैंक यू यार जो पूछ रहा है. रियली अप्रिशिएटेड. ऑल गुड यार. गोइंग बैक टू वर्क टुमारो. थैंक यू सो मच. नहीं यार, सैंचो कंप्लीटली डिफरेंट केस. मतलब उसमें क्या ही बोले, वो तो खैर उसमें हम लोग बाद में घुसेंगे. बट ओवरऑल बाय द वे मानस, तेरे को अच्छा, सब लोग कुछ पूछ रहे हैं किट के बारे में, तो किट की वीडियो हम लोग कल सुबह उसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे, एक छोटे से वीडियो में. सब लोग आज सुन लोगे तो कल का वीडियो कौन देखेगा भाई? मतलब इफ यू गाइस लिसन टू एवरीथिंग टुडे, कौन कल का वीडियो कैसे देखोगे?
बट चेल्सी और स्पर्स का मैच है आधे घंटे में. यस आई नो, चेल्सी एंड स्पर्स का मैच है. और Really? हाँ आज है ना. कौन सा स्पोर्ट है ये? हाँ. कौन सा इट्स स्पोर्ट है कॉल्ड ये? फूतेबॉल. फूतेबॉल. फुटबॉल भी राइट. है? After तो after the evident defeat, football doesn't make sense anymore, bro. हाँ सही बात है, सही बात है. बट लेवरकुसन रोमा भी है आज. देयर आर लाइक अदर गेम्स आल्सो. तो देखिए फुटबॉल. कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सब सारे रिजल्ट्स के बारे में. मानस, लेट्स एंड इट. या 1 घंटा हो गया, ऑलमोस्ट 500 लोग देख रहे हैं यार अभी भी. अगर आपने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को, लाइक कर दीजिए यार. सब्सक्राइब कर दीजिए टू मैनस इन द मॉक if you haven't subscribed to our channel yet. I don't know whether 26,400 हो गए, बट अगर नहीं हुआ है तो करवा दो दो यार. दो बाकी हैं. दो बाकी हैं. दो 26 और बाकी है 4. यार. 26,400 करवा दो बिफोर वी एंड द स्ट्रीम. Jayanta थैंक यू is जैन. saying this since a long time. Thank you so much. Really appreciate it. Very kind of you. A long way to go now, but you've been here since a long time. So thank you. Uh, yeah, if you haven't subscribed, please do subscribe to our channel. And we'll see you again here tomorrow. नई वीडियो के साथ सुबह, जो आपको अभी पता ही है हम क्या करने वाले हैं, तो देख लेना. अभी टॉपिक रिवील हो चुका है. तो कल सुबह बात करेंगे नए वीडियो के बारे में. और कल स्टेट ऑफ प्ले भी हम लोग करेंगे. कल या परसों देखते हैं हम लोग बात करके. वी विल डू स्टेट ऑफ प्ले आल्सो. बाकी एंजॉय करिए और अपना थर्सडे नाइट एंजॉय करिए. खाना पीना नहीं खाया तो खाओ. मैं भी जाकर खाता हूँ. अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग. अप द रेड्स. All right, see you guys. Good night.